शीघ्र वांगा प्रभु ಹೀಗೆ ಉಕ್ಕರಂಗ मृदंग वाला कुटे आए ओके कदी आनार मृदंग वाला आ, आ, आ. Oh, we are all our Prabhu's kripa. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopijana Vallabha Girivardhari Jai Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari
Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribol. Govinda, Jai Jai, Gopal, Jai Jai. Govinda, Jai Jai, Gopal, Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda, Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda, Jai Jai. Govinda, Jai Jai, Gopal, Jai Jai. Radha Ramana Hari, Govinda, Jai Jai. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Prabhupada, 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 Gurudev. Jai Shabad Paramahansa Acharya Sutra Sat, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Bibadi Founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ राधा कुंशाम गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय द्वारका धाम की जय रामेश्वर बद्रीनाथ धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगामय जमुनामय की जय वृंददेव तुलसी महारानी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution की जाए Srila Prabhupada Transcendental प्रसाद वितरण प्रोग्राम की जाए हरिनाम संकीर्तन की जाए हरिनाम संकीर्तन वीक की जाए गौर प्रेमानंदे all glories assembled devotees all glories assembled devotees all glories Shri Guru and Gauranga. Would like to welcome all the devotees for Sunday program this morning. Thank you for coming for Bhagavatam class. Thank you for staying back. You should also stay back for afternoon class and then keep yourself ready to go to Mira Road for Mega Harinam Sankirtan. So, Harinam Sankirtan ki,
हरिनाम संकीर्तन की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। This morning we are reading from Srimad Bhagavatam, canto number 7, chapter number 5, and the verse number is 52. Dharmam artham cha kamam cha nitaram chanupurvasyaham praradayochita rajan prashrita avanataya cha prashrita avanataya cha dharmamartham cha kamam cha nitram chanupurvasa praradayo chaturajan prashrita avanataya cha prashrita avanataya cha dharmam artham cha kamam cha nitram chanupurvasa praradayo chaturajan prashrita avanataya cha prashrita avanataya cha dharmartham cha kamam cha nitram chanupurvasa praradaya chatorajan prashrita avanataya cha.
Mothers, we should speak in English or Hindi? Huh? शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की धर्मम संसारी वृत्ति पर कर्तव्य अर्थम आर्थिक विकास आर्थिक विकास च तथा कामम इंद्र तृप्ति च तथा नित्यराम सदैव च तथा अन्नपूर्वशा क्रमणासुर क्रम अनुसार प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रहलादाय प्रहलाद महाराज के लिए उच्चतो उन्होंने कहा राजन ही राजा
प्रसिद्ध नम्र अवनताय तथा विनीत च बी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तत्पश्चात षंड तथा अमृक ने अत्यंत नम्र एवं विनीत प्रहलाद महाराज को क्रमशः तथा सतत रूप से धर्म अर्थ काम तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू किया। The translation in English. Thereafter, Sant and Amarak systematically and unceasingly taught Prahlad Maharaj, who was very submissive and humble, about mundane religion, economic development, and sense gratification. So, there are 4 stages in the spiritual progress. मानव समाज में 4 विधियां पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। इनका अंत मोक्ष में होता है। मानव समाज को आगे बढ़ने के लिए धर्म विधि का पालन करना होता है और इसी धर्म के आधार पर मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो धार्मिक विधि विधानों के अनुसार इंद्र तृप्ति की आवश्यकता पूर्ति कर सके। तब भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करना आसान होगा। यही वैदिक विधि है। जब कोई धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की अवस्थाएं पार कर लेता है तो वो भक्त बन जाता है। तब वो ऐसे पद पर होता है जहां से वो गिरकर पुनः जगत में नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते। जैसे कि भागवत गीता में उपदेश दिया गया है, यदि कोई इन 4 आवश्यकताओं को पार कर जाता है और वास्तव में मुक्त है, तो वो भक्ति के संलग्न होता है। तब उसकी इस संसार में पुनः पड़ने की संभावना नहीं रहती। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्महिताय च हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
Patidhanam pavanebhyo. So we are in the midst of a wonderful week where we are focusing ourselves to chant more, read more, and do more japa and kirtan together. So this is a very wonderful program given by our senior devotees to carry out our spiritual life very nicely and steadily so that we can develop our love, devotion, and mitigate our anartha nivarti on the path of devotional service. Again, it comes under the spell of the compassion for the conditioned soul who are not tuned to, otherwise accomplish what they should be accomplishing in this life. So, our duty is to see that we follow our responsibilities very diligently so that we can cross over the miserable material world very easily. And since time immemorial, this process has been coming to us. And in the present situation, we are studying from the Srimad Bhagavatam, and the person we are understanding is none other than the Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj is a Mahajan, he's a wonderful devotee, and you can see the unflinching faith he has in the Supreme Personality of Godhead and how he is focused in remembering Krishna in the most cumbersome situations. In Satyuga, of course, you may want to follow, or you may be interested in to follow Prahlad Maharaj's teachings, and you may read the story very, very nicely. But it takes real strong guts to follow the process. It's very wonderful story, though everybody is fantasized to hear this wonderful story about a devotee. Why cannot? It's an inspirational story since all the yugas, and we have come to the Kali Yuga and we are hearing. And we see Lord Chaitanya Mahaprabhu is always relishing the wonderful pastimes of Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, and so many wonderful devotees. So why shouldn't we, if it is consciously in the jiva, to always glorify the wonderful devotees so that they can purify themselves, their existence. So we see in this wonderful, you know, from the past 2, 3 verses, we are seeing that Father did the best in order to completely annihilate the Son, who was Vishnu's devotee, who was Krishna's devotee. He tried his best. He threw him beneath the feet of an elephant. He threw him among the huge snake pits, and employing destructive spells, hurling him from the top of the hill, and many other illusory tricks he tried to apply on his son, his own son. Okay? But he became stronger and stronger and stronger in every endeavor. Rather, these were tests for him. These were hurdles in his life, but he became victorious. Likewise, we have to also be victorious on all the impediments which come as hurdles to our spiritual life. And they can be unlimited hurdles.
We may have an economical problem. We may have parental problem. We may have an educational problem. We may have a girlfriend problem. We may have a boyfriend problem. We may have so many problems. But are we focused in the lotus feet of Krishna by chanting the holy name of the Lord? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. That unflinching faith in the holy name can only transcend us the material world. This is not concoction, this is not mental speculation, and this is not mythology, my dear friends. This is our history. This is Vedic history. Vedic history goes beyond this age of 50 years, 100 years, 200 years, 500 years, 700 years, 1,000 years, 1 lakh years. It goes beyond that. And we are hearing the wonderful story of Prahlad Maharaj. And Prahlad Maharaj was determined. And what was his forte? What was his trump card? What was his success? Because he had come just in the association of the pure devotee. In the association of the pure devotee, he transformed his life. And just hearing the wonderful pastimes of Krishna in the womb itself, he became a devotee, and he became a wonderful devotee who had unflinching faith in the Supreme Personality of Godhead. So until we endeavor to hear this nectarian pastimes of the Supreme Personality of Godhead through proper devotees, it's not possible. Material world is not going to push you to spiritual world just like that. It's not going to happen just like that, like we have been hearing from our childhood. जब बुढ़ा हो जाएगा तब मंदिर चले जाना. Isn't it? पता ही नहीं है कब मर जाता आदमी. सीईओ बन गया 45 years में, फिनिश. अभी 22 भी क्रॉस नहीं किया, slammed completely, accident. So who knows this? Who can claim that I'm going to be dying on particular date? And if we don't have this indication from the Supreme Lord, how do we say that बुढ़ापे में मैं करेगा? बुढ़ापे में तेरा अंग भी उठेगा नहीं, कान भी बहरा हो जाएगा, आंख में चश्मा चढ़ जाएगा, अक्षर भी नहीं दिखेगा, तो क्या करेगा तुम बाद में? ये धारणा है वैदिक नॉलेज. भागवतम कंप्लीटली खंडन करता है. और प्रहलाद महाराज वेरी क्लियरली बता रहे हैं, कौमारम आचरते प्रज्ञु. महाजन हमको बता रहे हैं कि कुमार अवस्था से अपने आध्यात्मिक जीवन कीजिए. मगर आजकल के मॉडर्न माता पिता अपने बच्चों को घर में ही रखते हैं, या तो मॉडर्न स्कूल्स में भेज देते हैं. पढ़ पढ़ पढ़, कुछ अच्छा कर, कुछ अच्छा बन. घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ, कभी होटलों में जाता है तो कभी उधर जाता है. वो भी चलेगा, जा तू, मगर कुछ कर. गर्लफ्रेंड है तो ठीक है, कर, शादी भी कर, मगर कुछ कर, कुछ कमा. Isn't it? ये कलयुग का इंस्ट्रक्शंस है अपने माता पिता के, अपने बच्चों के लिए. Isn't it? Who is mother here? यही चाहते हैं ना. This is what we see. This is what we have been hearing. This is what Samved heard from the parents. This is what Samved's brother taught him. Okay. Very good, fortunate soul. That's why we're having his wonderful association here. Isn't it? So this is the beauty of this Kali Yuga.
And you can see that in Satyuga also, Hiranyakashipu wanted to see that the son gets trained in all the managerial, all in kingly administration. And that's what he engaged the teachers for, is that Nakopaiji, we don't want him to become a devotee. We want him to become an able administrator. And that's why he put these two wonderful teachers as custodians for this emerging Prahlad Maharaj, who was rebellious from the young age. He wanted to chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Bhajaman Narayan, Narayan, Hari Hari. Hari Hari, Vajman Narayan, Hari Hari. So Narad Muni is saying that you chant the holy name of the Lord, you chant, always. And Prahlad Maharaj learned all these things, isn't it? And he was not interested in this material world. And now these teachers are giving ashwasan to the Hiranyakashipu that he is very humble. We'll try our best to change his course of life and we'll teach him furthermore on the instructions, like on all these administrative, social, political, all education we'll try to give him. You don't worry, we'll take care of him. Though he is closer to me. Who is saying this? Hiranyakashipu. He says, though he is closer to me, he is fearless. Wherefrom he became such fearless? So devotees in all the yugas are fearless. Whether it is Kali Yuga, whether it is Satyuga, devotees are always fearless. And those who have unflinching faith in the holy name and Guru's instruction, he will become fearless all the time. 500 years back, Haridas Thakur, who took birth in Muslim family, he had such a unflinching faith in the holy name that even the kings, the Mughals at the time, they beat him in 22 bazaars, peeled off his skin with hunters. But he didn't leave chanting the holy name of the Lord. And he emerged then very successful against the two tyrant Jalads, just 500 years back. Isn't it? In what consciousness one develops the taste for chanting the holy name of the Lord is very, very important. The quality of chanting should be absolutely for your own nirvana, for your own resurrection. This is your asset. This is your, holy name. If the philosophy of Krishna consciousness has gone deep into the consciousness of yours, then there will be nobody to trouble you on the path of divinity, because you will be attracted to the Lord's holy name and Lord's devotees. And if you make these three things as asset of your life, you'll be guaranteed. You'll be guaranteed that you'll be transported to the spiritual world. And if you are reluctant, if you are easygoing, nobody can save you. This is very, very important. All of you who are all trying to progress on the path of spiritual life, as teachers, as instructors, or anybody, you must first take care of yourself. You must take care of yourself first.
See that you chant your rounds. See that you read your Vedic Shastras properly. And see that you practice Krishna consciousness very nicely. Prahlad Maharaj had unflinching faith in Narada and Narada's instructions. And that's why he could face the tyrant like Hiranyakashipu in his life. And he could face all the hurdles. But sometimes we are very emotionally very weak. We get influenced by our parents. We get influenced by our mother, father, environment, business. So many things we have. This is very little life in the age of Kali Yuga, just 100 years max. And within this 100 years max life, we have to maximize our devotional service and keeping your interests alive all the time. Whether you are in your office, whether you are in your temple, whether you are at your home, whether you are in your association, see that you keep your interests alive, because you have that propensity. You have emerged out of all the hurdles in your life, that you have a taste, natural taste of coming to the temple, hearing from the spiritual master, hearing the holy name, chanting the holy name, dancing in the kirtan. This is your natural propensity attached to the holy name. So never ever minimize this propensity in your life, because it has not come only from this life, it has come snowballed from the previous lives. That's why you have come under the shelter of a great Acharya like Srila Prabhupada, and in his home, which he created, you are becoming a citizen, you are becoming participant, you are becoming lover of this home, which gives you access to the transcendence without any other frills, which may not be conducive as for shastric evidences. People fall in trap. They come to the acharyas, they come to the so-called gurus, they fall into different understandings, and under these circumstantial situations, they don't become wonderful devotees. They love devotees. They see their car, everything. They love devotees. But they are entrapped in a situation where they cannot follow these systems I have seen in my life. Why? Either your parents have been very strong to influence you, what they are doing, they should follow, or you have guru who is not in parampara, or you have been cocooned in a situation which will not give you the ultimate perfection in spiritual life. But when you adhere to the instructions of the Srimad Bhagavatam and instructions of Srila Prabhupada and instruction of Vartaman Acharyas, you will see that you will carve out of you a wonderful devotee under most precarious situations, which may not be always conducive for the progress of spiritual life. Just keep on chanting the holy name of the Lord. Keep on associating with the devotees. Keep on eating Krishna Prasadam. Keep on dancing and chanting and executing devotional service. This is very, very important. Executing devotional service. Prabhupada is explaining Dharma, Artha, Kama, Moksha. Correct? But how do you transcend all these four stages of life? It's only by devotional service. Because Dharma, Artha, Kama, Moksha can make you a Brahmana, but it cannot make you Vaishnava. You want to become Vaishnava, you want to become Prahlad, you want to become Dhruv, you want to become Prabhupada. So whom you will follow? Prabhupada. Isn't it? You cannot follow your mind, and you may not understand the rahasya of Bhagavad Bhakti, which Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying. Chaitanya Mahaprabhu is Yoga Avatar. He just came. He is come. He is saying the chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare.
If you want to follow Hiranyakashipu, keep on meditating for 40,000 years. Meditation कर रहा हूं मैं, isn't it? आप क्या कर रहे हैं? मैं मेडिटेशन कर रहा हूं. क्या मेडिटेशन कर रहे हैं मैं बताऊंगा नहीं. Hiranyakashipu also meditated for 40,000 years, isn't it? But what for he meditated? What for he meditated? Huh? Sense gratification. उस डिग्री पर पहुंचने के बाद भी इच्छा क्या है? मैं अमर बन जाऊं. और उन्होंने अपने जीवन के उस पराक्रम से दानवों और देवताओं को परास्त कर दिया था. इंद्र भी उनके आंखों से डरते थे. ऐसा पराक्रम. मगर वो सब खत्म हो गया क्योंकि उसमें आध्यात्मिक रस नहीं था, भगवत भक्ति का रस नहीं था. अपने को बुलंद करने का शक्ति था. अपने को बुलंद करने की जो शक्ति है वो सीमित रहती है भाई. मगर भगवत आश्रय रहते हुए भगवत कार्य को करने से आपको शक्ति कौन प्रदान कर देता है? स्वयं भगवान. इसीलिए प्रहलाद महाराज यहां पर अपने पिता से भी पावरफुल सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भक्ति का संचलन जो किया है वो बड़े तीव्रता से, बड़े ही सतर्कता से और बड़े ही अटैचमेंट के साथ किया. उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापी विमोक्षसामि महासुच. Till you give up your kaitava dharmas, till you don't give up everything, you cannot become fearless. But the devotees become fearless, whether he is Prabhupada of Kali Yuga or Prahlad of Satyuga. Isn't it? So that is the crux of this verse here. We see that, in this place, it is in the, it is said in the previous one. So still, Prahlad Maharaj is getting further more instructions. They're getting the last, thing from these two personalities. They said that we are going to mold him. They were still very, very positive about their prowess. अगर बच्चा फेल हो जाता है तो टीचर बोलता है ना, माता पिता को आश्वासन देता है, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, मैं कोशिश करूंगा इसको अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए, आप बस पगार देते रहना. इसी तरीके से पगार चालू था. किसका? सांड और मकरंद का पगार चालू था. They were given all comforts by the king. So we'll try to make him better. We'll try to make him better, devotee of yours. He will speak your name very soon. Jai Hiranyakashipu ki jai. Isn't it? And the modern parents are wanting us to become Hiranyakashipus of modern times by sending us to these wonderful slaughterhouses where you will be chopped off completely. And if you want to progress on the path of spiritual life, there is no chance for you if you go to such schools where they are going to chop your propensity of devotional service. Even if your father is very rich, my dear sir, I don't want to say names, but there have been even the family of devotees. Dhyan se suno aap. In the family of the devotees, the sons, the grandsons, when the money is enough, what do they want to say? You go to the best of the school, English medium schools.
If you are staying in Africa, I will send you to Uti. If you are staying in India, I will send you to Boston. If you are studying here, I will send you to some best university. What is happening in this whole endeavor? Lots of money is spent in shaping for them to become better citizens. What does the meaning of better citizen mean? अकिंचन माधव प्रभु बोलेंगे कि मैंने तो अपने दो बच्चों को न्यूजीलैंड भेज दिया. ये सूरदास प्रभु क्या बोल रहे हैं आप आजकल? उस वक्त तो बड़े खुश हो गए थे जब उन्होंने बोला बेटा जा रहा है न्यूजीलैंड. आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद. अब देखना है कि वो एज इट इज वापस लौटते हैं कि नहीं. बिकॉज जीवन में क्या है कि देखिए क्या है, even the devotees' parents are not able to cultivate their children properly because somehow or the other their heart is doing some chitkar. They're not in line with pure devotional service where they want to become wonderful devotees, or they don't want to train their children to become better devotees. And with the result, what happens? They spend lots of money on them. They become successful in the material education, but their character, their personality gets completely wiped off. What is that? If the grandchildren is trained to train in the family, slowly, he will get up early in the morning. He will offer, pranams to the Dada, Pitaji. Magar, when they are sent to English medium schools, after 6th class or whatever it is, slowly they finish. They feel that the grandparents are burdened in their homes. The answer is Suniya, this is truth. And slowly they are looking for friends who are very young. And they influence each other and they forget. I have seen in my life many people getting married, not even in their own families, in their own race. They get married once they become, bigger families, and they like to get, Indian boy will like to get married to a French girl. Indian boy will try to get married with a Canadian girl. They will leave this place. They want to go away. And it's happening. It's happening so seldom. And then they have to lament in their lives. So don't push your family members to attain so modern education. And this modern education is going to peel off their, inbuilt sanskara. Slowly, when they go into this material world, their sanskaras vanish because these sanskaras are not completely based on, perfectly on dharma, artha, kama, moksha. Because beyond this whole family life, there is some returns, some interests, and some self situations. And that's what you see maximum people are, developing a demonic family. If the parents have taught you to become vegetarian, their grandchildren are not vegetarian. They are eating all nonsense. Sanskara vihina pashubihi samana. Because we are not continuously giving them the sanskaras by which they will progress on the path of spiritual life. So my dear Prabhus, we see here Prabhupada is giving us a wonderful thing. Therefore, in an Aryan system, there is a varnashram, dharma, by which everyone should be educated according to his position in society's division of varna, brahmana, kshatriya, vaishya, and shudra, and ashrama, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. A devotee, see Prabhupada ji kya bol rahe? A devotee purified by devotional service is always in the transcendental position above the mundane qualities.
जो भगवत भक्ति करता है वो स्वयं से इन सब से उभर जाता है? और thus the difference between Prahlad Maharaj and Hiranyakashipu was that Hiranyakashipu wanted to keep Prahlad in a mundane attachment, whereas Prahlad was above the modes of material nature by simply executing devotional service. Now you can understand how Prabhupada ji is emphasizing time and again this devotional service. This devotional service is very, very important. In order to become the compassionate acharya for the whole humanity, irrespective of caste, creed, and religion, how did he endeavor to establish international society for Krishna consciousness so universally so that all the citizens of Mother Earth can rise above their modes of material nature and engage in devotional service. He created little oases everywhere where you can come, execute devotional service, and become perfect in this human life. So that is what it is said. As long as one is under the control of material nature, listen this, okay? As long as one is under the control of material nature, his occupational duty is different from that of a person not under such control. One's real dharma or occupation duty is described in Srimad Bhagavatam, dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. Prabhupada is teaching us. I know some friends will not be agreeing with me, like our Prabhuji. He's busy in his job. But if I tell him, you give up now, you become a wonderful devotee here, you are very perfectly situated now. It's very different. बिकॉज रुपया पगार जो आता है महीने का वो बहुत अच्छा लगता है ना, isn't it? सो कब वो अच्छा नहीं लगने लगेगा? जब आपकी भगवत भक्ति का पलड़ा भारी हो जाएगा। अब वो पूरे कुटुंब को भी तैयार करना पड़ेगा उसके लिए, isn't it? अकेले नहीं कर सकते। इसलिए ऑल ऑफ अस वी हैव टू डेवलप दिस प्रोपेंसिटी, आज नहीं तो कल, स्टेप बाय स्टेप। लॉन्ग रूट लेना चाहते हैं, धर्म अर्थ का मोक्ष, डिवोशनल शॉर्टेस्ट रूट लेना चाहते हैं, कम टू द प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। हरिनाम 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 एव केवलम कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते गतिरनता। कीप ऑन चैंटिंग, कीप ऑन चैंटिंग, एंड देन as described to his order carriers by Dharmaraj or Yamraj, a living being is a spiritual identity, and therefore his occupational duty is also spiritual. ये शब्द प्रभुपाद जी इस्तेमाल कर रहे हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, वेर ऑल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। मगर कुछ ऐसे पाप किए हम लोगों ने कि धरती पे आ गए, मगर धरती पे बहुत से लोग समझाने लग रहे हैं, अब तुमने पाप कर लिया मगर अब धर्म के रास्ते पे आ जा। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कानों के बीच में चला जाएगा, तो हम भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भक्तों और भागवत और संकीर्तन के द्वारा समझ सकते हैं। इट्स पॉसिबल। और इस पथ पे जो चलने वाले हैं या चल रहे हैं, उनके अपने व्यक्तिगत जीवन से आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का जो जर्नी है कहां से कहां तक लाया, क्योंकि ये महत्पाद रजो अभिषेक महाभक्तों की कृपा से ही संभव हो सकता है। ऑफ योर ओन इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड द रियल धर्मा इज टू गिव अप एवरीथिंग एंड सरेंडर। सर्वधर्माम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से हमें सिखाया, जैसे कि हम लोग कल परसों कंटिन्यूसली प्रभुपाद जी की जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हुए कितने अथक प्रयास के अंतर्गत प्रभुपाद जी ने पूरे पाश्चात्य देश गए,
पहली बार जब बॉस्टन में गए, जब चले गए, कितने 3 हार्ट अटैक हुए, बॉस्टन में पहुंचे, वहां पर भी बहुत विचलित मन रहा उनका, भगवान से आराधना कर रहे हैं कि हे भगवान, आपने मुझे इस जगह पे क्यों लाया है? अगर लाया है तो कुछ ना कुछ सही उद्देश्य होगा, क्योंकि शुद्ध भक्त कभी भी उनके निर्देशन के बगैर कोई स्टेप नहीं लेता है, गुरु और कृष्ण के बगैर कोई स्टेप नहीं लेता। इसी और प्रभुपाद जी गुरु के आदेश में गए और अपने 70 वर्ष की आयु में, 70 वर्ष की आयु में जब वो बॉस्टन पहुंचे और वो देख रहे हैं बड़े बड़े बिल्डिंग, कभी प्रभुपाद जी ने देखा नहीं था। कलकत्ता में, इलाहाबाद में, वृंदावन में, छोटे गांव में ऐसे ऐसे बड़े कुछ नहीं देखा था। जब वो पहुंचे तो उनको आश्चर्य लग रहा था, और ये आश्चर्य आप सुनेंगे तो बड़ा ही प्रभुपाद जी जब वहां पर पहुंचे तो मिस्टर अग्रवाल उनको लेने के लिए आए। उनको बटलर, पेंसिल्वेनिया, उन्होंने, अग्रवाल जी ने उनका सब कुछ किया था। तो उन्होंने, इस अग्रवाल फैमिली ने 2-3 लोगों को भी और वीजाज वगैरह या ऐसा होस्ट करने का सोच, मगर इस बार वो श्योर नहीं थे कि वो भी आएंगे क्या, तीसरा भी आएगा कि नहीं। दैट इज प्रभुपाद जी। क्योंकि उनके, मिस्टर अग्रवाल के माता पिता मथुरा से थे, दे वर रिलीजियस पीपल, बट उनके बेटे ने विदेशी के साथ शादी कर ली, शैली के साथ शादी कर लिया, मगर वो हमेशा टच में रहते थे वृंदावन। तो श्रील प्रभुपाद जी को पहली बार जब लेने आए, वो वॉक्सवैगन गाड़ी लेके आए और उनको लेके गए घर पे, और बटलर पेंसिल्वेनिया में उतरे थे तो आए उनके सामने, पहले ही फोटोग्राफ भेजा था, सब कुछ बताया कि नहीं। तो वो जब गए तो वहां पर घर पे गए, और वो लोग मांस भी खाते थे, दारू भी पीते थे, हाँ, स्मोकिंग भी कर रहे थे, हाँ। 20 साल वृंदावन रहने के बाद में एक संत को ऐसे स्थान पे भेजा जाए, हाँ, ध्यान से सुनिए आप, हाँ, इट्स ऑल राइट, दैट्स प्रभुपाद, इट्स ऑल राइट। एंड it was a kind of sensation, and it was so brilliant that when he saw someone twice, he knew who they were. ये शैली अग्रवाल बता रही है कि प्रभुपाद जी उनके घर में जब उनके लोगों को होस्ट कर रहे थे घर पे, तो बहुत से लोग आते थे, तो वो उनको उनके नाम से पुकारते थे। इतने शार्प थे प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में, हाँ। उनके घर में हम लोग सत्संग करते हैं। दिस इज हाउ वी स्टार्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑफ समबडीज प्लेस, दैट यू गो एंड डू अ सत्संग, घर घर प्रचार कीजिए, हाँ? तो वहां पर प्रभुपाद जी के बारे में सब लोग जानने लगे, क्योंकि वहां के पेपर वगैरह में उन्होंने दिया था अग्रवाल जी ने कि हमारे यहां पर एक संत आए हुए हैं, उनका दर्शन कीजिए आप लोग। तो 10-20 लोग आते थे, मगर प्रभुपाद जी इतने विट्टी थे कि उनको बहुत चतुर लगे, सब लोगों को लगे कि ही इज वेरी शार्प माइंडेड पर्सन। एंड देन ही यूज्ड टू स्पीक
fluently English, and they were very much impressed. And वहां पर भागवतम का आर्टिकल वगैरह सब आए, प्रभुपाद जी ने लेक्चर वगैरह दिया. My mission is to revive people's God consciousness, says Swamiji. God is the father of all living beings in thousands of different forms. He explains human life is a stage of perfection in evolution. हाँ, ध्यान से सुनो आप लोग. If we miss the message, back we go through the process again. He believes Bhaktivedanta lives as a monk and permits no woman to touch his food. On a 6 feet ocean voyage, 6 week ocean voyage, and at the Agarwal apartment in Butler, he prepares his meals in a brass pan with a separate level for steaming rice, vegetables, and making bread. At the same time, he is strict vegetarian and is permitted to drink only milk, the miracle food for babies and old men. He noted if Americans would give more attention to their spiritual life, they would be much happier, he says. अपने सिद्धांतों में कभी कमी नहीं रखे और एक ही यू नो जिसको टिफिन कैरियर बोलते हैं, अपने लिए वो भोजन बनाते थे. हाँ, खुद. यहां पर हम लोगों ने 2-4 कुक रखे हुए हैं भोजन बनाने के लिए. हाँ, किसी को बोले जरा किचन में आज कर, उसको लगता है जैसे मैं कारागार में जा रहा हूं. उसको बोलिए नो, व्हाई डोंट यू कुक फॉर समथिंग, यू नो, ही फील्स वेरी ऑफेंडेड. किसी को बोले वेजिटेबल आने के लिए, उसको बोलता है अरे ये मेरा काम है क्या? Somebody else should do it. But Prabhupada ji cooked himself at the age of 70. He washed his clothes himself. And he was not allowing everybody to wash the clothes. हाँ, ये है प्रभुपाद जी. और जब तक आपके उस आइडियल के प्रति मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आप उनके चरण तक भी पहुंच नहीं सकते. बाकी दूर की बात, ग्रंथ पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, नॉलेज भी आ जाएगा आपको, मगर that attitude of humbleness and surrender and hard work will not come. You will become more puffed up. You will become more puffed up. So we have to learn from Prabhupada how much hard work he has done, you know. And Shally is saying he was the most easiest guest I ever met. He was so simple that I had to do some work or I had to go somewhere else. He will keep on chanting all the time. Always he was chanting. And then he was, one evening a guest asked Prabhupada, what do you think of Jesus Christ? And Prabhupada replied, he is the Son of God. Then he added that he, the guest, was also a son of God. Everyone was interested to hear that the Swamiji accepted Jesus Christ as the Son of God. This is 1965, Butler, Pennsylvania, where most of the Christians came to the Sally's house because they hosted him and they were getting the association of Srila Prabhupada. So he was, like when he cooked, he used only one burner. The bottom level pot created the steam. He had the dal on the bottom and it created the steam to cook many other vegetables. So for about a week, he was cooking this great big lunch, which was ready about 11:30, and Gopal always came home for lunch about 12. उनके लिए भी बना रहे थे.
आपने किसी ने आपको होस्ट किया है, तो ये कुक भी बन गए उनके घर में और उनको प्रसाद खिला रहे। तो हम लोग कभी जाते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जल भी दे देगा कोई, प्रसाद भी बनाया आगे होगा, तब जाके मैं प्रवचन भी करेगा। Our expectations have become too much. How can we remain very simple and yet slip our envelope of Krishna consciousness? That's the very making other people, even the host, most comfortable. Sometimes we make more, hosts very, embarrassing. This depends upon individual's profile. What, how, who you are. A transcendentalist who's beyond the concept of the materialistic cannot understand who the Acharya, how the Acharya is. But the main purpose for which he came is doing that. You see, that's very important. Prabhupada ji is always liking the streets of Butler, Pennsylvania. He is seeing the new things here, and he was like, he used to go to the mall and pick up the things over there for himself. He was very, it's just like you send a new boy to America and he will get mesmerized by all this, what is glittering all around. But Srila Prabhupada was knowing what he has to do, and this is what then there are a lot of students came, student programs happened. Prabhupada ji gave to the class to the students, and this is how he started, his journey, and he would write back to Sumati Maharaji that how he is slowly trying to make his, personality felt in the America. And this is what, he went to America, he went to Tompkins Square Park from that place, and we see, how he struggled in Tompkins Square Park, how अकेले उन्होंने नाम संकीर्तन पार्क में किया। और इस नाम में शक्ति है। एक आचार्य जब इस नाम के प्रति संपूर्ण आसक्त है, उस नाम के सहारा, उनके भक्ति के स्ट्रेंथ के सहारे अलोन चले गए, और अब वो वहां से निकल गए, अभी न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं, और वहां पर अकेले ही इस पथ पे चल रहे हैं और नाम संकीर्तन अकेले कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। अकेले पार्क में बैठ के अकेले भक्ति का सबसे प्रमुख अंग जो है नाम संकीर्तन पार्क में कर रहे हैं। जो भी भक्त हैं उन्हें इस नाम की शक्ति को जानना है। नामामृत, इस कलयुग में भगवान ने इस नाम में संपूर्ण शक्ति प्रदान की है। सतयुग में भी इस नाम में शक्ति थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी है, और कलयुग में तो स्वयं भगवान इस मंत्र को हमको जनाने के लिए आ गए। त्रेता में वाल्मीकि जी तर गए, मरा करते हुए राम नाम जप लिया। मालूम भी नहीं था कैसे करना था, मरा ही मरा बोल दे। वही नारद जी जो सतयुग में आए प्रहलाद के लिए, वही नारद जी त्रेता में भी आ गए वाल्मीकि जी को बताने के। क्या कर रहा है तू? व्याध बन गया है, मांसाहारी है, वो है, ये है, आजा चल थोड़ा सा भगवान का नाम स्मरण कर। क्योंकि हर युग में भक्त जो है बड़ा कृपालु होता है, और कलयुग में स्वयं भगवान कृपालु बन के आ गए, चैतन्य महाप्रभु बन के, और स्ट्रीट नगर हर जगह पे भगवान का नाम स्मरण करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। वो पवित्र होके कौन? वाल्मीकि जी पवित्र हो गए, क्या काव्य लिख दिया? रामायण लिख दिया। हाँ? और चैतन्य महाप्रभु के संग में आके रूप और सनातन आए। ध्यान से सुनो आप लोग, उस नाम से पवित्र हो गए, अपने भौतिक तखलुसों को परित्याग कर दिए, कृष्ण के शरणागत हो गए, और इस नाम के बल पे वो भौतिक जितना भी स्टेटस था उसको भी छोड़ दिए। उस भौतिक स्टेटस को परित्याग करने के बाद में ऐसा स्टेटस मिल गया कि वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बन गए। और जब पार्षद बन गए, पार्षद बनते 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 चैतन्य महाप्रभु ने काम भी सौंप दिया हम जैसे बद जीवों को सुधारने के लिए। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन के इस काया को बदलने के लिए रूप और सनातन जी ने हमको क्या दिया? भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। बड़ी बड़ी पुस्तकें हमको दे रहे हैं, और कलयुगी जीव को रुचि नहीं है पढ़ने के लिए भाई। उसको सिर्फ प्रसाद खाने की रुचि है, बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। तो उसको मालूम नहीं है कि ये प्रसाद भी तुमको एक दिन पटक देगा। खाते रहे खाते रहे खाते रहे, एक दिन ऐसा पटक जाएगा कहीं नहीं जा सकता। याद में बता रहा हूं, वेरी क्लियरली। आप सोच रहे होंगे कि चलो मैं केवल प्रसाद ही खा के चला जाऊंगा। ये कब इसका मेडिसिन लगेगा, कब आपकी बीमारी केवल एक मेडिसिन प्राप्त करने से दूर हो जाएगी, आपको मालूम नहीं है। ये कर रहा है काम, मगर आप उससे अवगत नहीं है। जिस तरीके से प्रभुपाद जी मैचलेस गिफ्ट के स्टोर में अपने हाथों से रसगुल्ले बना बना के खिला रहे थे, जार में रखते थे, तो वो खुश हो जाते थे। बुलेट्स, गोली, प्रभुपाद जी खुश होते थे। जितने भी नहीं खाया उसको सुधर जाएगा। और वही हुआ। जो पहले फोकटिया खाते थे, प्रभुपाद जी के बारे में पूछने लगे कि प्रभुपाद जी आप कैसे रह रहे हैं इस छोटे से कमरे में। ध्यान से, इसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन। उसी का हृदय परिवर्तन हुआ, और वही प्रभुपाद जी का बोल रहे, वी मस्ट डू समथिंग फॉर यू। How can an old man stay in a one small place? We should rent a place. We should have something for you to stay, something for us to hear. Who did it? Prabhupada ji did it duty, but he was acting. Krishna Prasad was acting. Krishna Katha was acting. Krishna Rasayan was acting. Prabhupada ji's Kirtan was effecting. So never ever think that we can transform immediately, but the process is so powerful, that this holy name is so powerful that it can transform your lives. Even the most debauchees have changed in the previous lives, in their lives. And what to speak of us? We will also change our lives and we will become wonderful devotees. But have a faith in the process of chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. So in this Kali Yuga, Lord has given the complete strength in His holy name. But if you say that Ganesh भी करके मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र का इफेक्ट आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। स्मार्थ ब्राह्मण कुछ भी नॉनसेंस बोलेगा तुमको दक्षिणा प्राप्त करने के लिए। शास्त्र क्या बोल रहा उसको फॉलो करना। हरिनाम 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 एव केवलम खलु नास्ते वनास्ते वनास्ते गतिरन्यथा।
और कोई साधन नहीं है, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने इन मंत्र में संपूर्ण शक्ति भर दी। पहले भी थी, अब स्वयं भगवान आ रहे हैं हमको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए। और हम इतने डीठ हैं कि हमें इस नाम के प्रति प्रीति नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सर्व शक्ति स्वयं भगवान बता रहे। तो अब किसका मानोगे भाई? भगवान ही बता रहे हैं कि मैंने इस नाम में संपूर्ण शक्ति भर दे, तुम्हारा क्या और एजेंडा है? If at all any agenda is in the brain of any materialistic person, it's completely contrary to the instructions of Lord himself, and that can be completely nonsense. That's crazy. So it's our responsibility for chanting the holy name nicely, making everybody to chant the holy name of very nicely, become compassionate to the people and give them this holy name. This holy week has been created all over the globe for all of us to connect more people. आप तो जप करते ही है, मगर इस वीक में मैंने सुबह मंगल आरती में उसको निर्देशन कहिए, इंस्ट्रक्शन कहिए, प्ली कहिए, प्रार्थना कहिए, that let us connect. Every person, every devotee of Radha Madan Mohan Ji must connect with minimum 10 people and inspire them to chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. When Jagai Madai can chant, why not? We can also chant. We also can chant. Prabhupada ji said, in the Western country, they were much more than Jagai Madai. But when they became wonderful devotees, why cannot we become devotees? What is our problem? We have so much of attachment to materialistic activities, Kaitava Dharma. We have so much attachment to our own upbringing. We have so much attachment to our own thinking and feeling and willingness, our own. But you just give up this independent methodology of gratifying senses in the pretext of this so-called religion, which is not going to give you the ultimate perfection of life. You give it up. You just give it up. Just surrender. Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam vraja. Krishna is demanding. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is also demanding that, hey Jeev, even if you are caught in the whirlpool of materialism, accept the helping hand of a divine devotee who is trying to give you this holy name. Don't shun away from this. Don't refuse it. Sometimes I see yesterday I was sitting outside in the evening and devotees were saying, our Kripasindhu Prabhu was very begging them, why don't you chant? Why don't you take the book? So the materialistic propensity is so filthy. They said, बच्चा को किताब मत दे दो, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं. Can you imagine? These are all rascals, demons. They may come to the temple, but at heart they are completely demons, because they don't want to give this actual sanskaras to their children. They want to send them to the slaughterhouses without having the basic cushion of bhakti. And if they don't have sanskaras in their young age, they will go crazy out in the material world. Any college, any university, any place they go, they will become crazy. So my dear friends, my dear brothers and sisters, it's our responsibility to save the world. But before we go on the path of saving the world, we must save ourselves. And we have to chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. I beg you all, my brothers and sisters, today is a Sunday. Thousands of people will be coming to the temple. Give them the mala. Make them to chant at least one mala. Personal interest you also give up today, going to the home and this and that. Just be here in the temple and keep on
passing on the mala to them so that they can chant. And that's what is the temple for. That is what is the temple for, and that's what you are contributing for building the temple like this, which can transform the lives. We are not matadishis. We are not looking for our own comfort zone. We're looking for the comfort zone of those people who are engulfed in the materialism and not knowing the prowess and purity of this holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Slowly, slowly, you're transforming your lives, and let us also transform the lives of others so that we build this community on the basis of the instructions of Srila Prabhupada and Shastras and nothing else. Let us chant some little more kirtan today. And a whole day, there's going to be kirtan, and then after the afternoon session, we'll go to Mira Road. There'll be buses available to you for going to Mira Road so that you can meet other groups of the devotees there to do Maha Harinam Sankirtan. Okay? Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Jai Gurudeva. Jai Prabhupada, 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 Jai Gurudeva. Prabhupada, 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 Gurudev. Srila Prabhupada ki jai. Shri Gaur Nitai Bhagwan ki jai. So I'd like to humbly request everybody to chant. Those who are not chanting, please pick up the mala and learn from a near devotee how to chant, and take a mala, take a real treasure to your home and start chanting from today itself. Those who are not chanting. So please, how many people are not chanting today? Are not chanting? जो यहां पर आए हैं, कौन जप नहीं करते? हाँ, बताइए, जो जप नहीं करते हाथ खड़ा करिए। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हाथ उठाया, क्योंकि उसके लिए भी साहस चाहिए। हाँ, आपने साहस किया, और आपसे मैं भगवान के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि आज से आप माला स्टार्ट करें। ये मेरा दिया हुआ सूत्र नहीं, या इस्कॉन का दिया हुआ सूत्र नहीं है, ये परंपरा से आ रहा है। भगवान सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में बोल रहे हैं हमको, जप कीजिए। माला पे जप करने से शिव जी भी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, गुरुजन भी कर रहे हैं। हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको बेजे में बीमारी है। बेजे में जब तक बीमारी रहती है, तब तक हमारा नाम स्मरण करने के लिए ठीक नहीं रहता। इसलिए जस्ट चैंट, लव योर सेल्फ and love your family, and keep on chanting. Those who are not chanting, you give them the chanting mala and see that how their life will be. Okay? This is, thank you very much, Mataji. Give a big clap to Mataji. It is just like in the assembly, you ask somebody, क्या तुम दारू पीता है? वो चुप रहता है। मांस खाता है, चुप रहता है। सिगरेट पीता है, चुप रहता है। हाँ? और बाकी सब काम करता है, चुप रहता है। बिकॉज वो दिखना नहीं चाहता गलत चीजें। Isn't it? तो इसी तरीके से माता जी का भी साहस था कि उन्होंने बोला नहीं, तो आज उनको भक्तों की कृपा मिले, और जो भी माता जी इनको नाम स्मरण में हेल्प करेंगे, उनको आज माला दे दीजिए। और माता जी, आप इनको जप माला सिखाइए। और कोई प्रभु जी यहां पर जो जप नहीं कर रहा है, कीजिए। आप भी बहुत सालों से आ रहे हैं। कौन खड़ा की? ओके, उठिए उठिए, खड़ा रहिए, आज से जपमाला कीजिए। ओके, एक, आई एम बेगिंग यू, you are our old stalwart, old life member, don't get tossed in the different philosophies. That's all nonsense, because that's not in tune with what is scripture is talking about. And today you start chanting. Take the mala from Sita Mohan Prabhu, give this mala to him, and give this Prabhu ji also mala, and chant. आप देखेंगे इस नाम स्मरण से, है ना, बड़े बड़े संत लोगों ने नाम स्मरण किया। हाँ, वही वही संत जो है जिसने नाम स्मरण किया, वो आज भी अमर है, चाहे वो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, कलयुग में।
तुकाराम जी 500-400 साल पहले नाम स्मरण स्टार्ट किए थे। प्रभुपाद जी आए 100 साल पहले, नाम स्मरण सिखा गए हमको, और इस नाम में शक्ति है। कृपा करके इसमें आप और कुछ अन्यथा टिप्पणी या कुछ संकुचता मत रखिए। जस्ट एडहर टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। माता जी में सब लोग जप करते हैं। पूजा बिटिया, जस्ट चेक एवरीबडी चैंटिंग, रेज योर हैंड्स हु इज चैंटिंग। अपना हाथ खड़ा कीजिए जो जप करते हैं। ओके, जो नहीं करते हैं, देखिए एक माता जी आई है सामने, यस, जो नहीं करते। सो यू हेल्प माता जी, सम माता जी शुड हेल्प दिस माता जी, गिव हर द मंत्र जप माला एंड टीचर। और पीछे भी एक माता जी है। ओके, जस्ट नाउ टेक द माला and help them to become wonderful devotees. Okay, and this Prabhuji. And what about yourself, sir? What is your good name, sir? Wow. So Akash ji, you please, आपके तो इनबिल्ट भक्ति है, अब उसको एनहांस कीजिए, एनहांस कीजिए, बिकॉज आपके जीवन में कई संस्कार हैं, बहुत से संस्कार हैं, उग्रसेन जी के संस्कार हैं, तो हमें नाम स्मरण करना चाहिए। गिव प्रभु जी को जप माला दीजिए, अग्रवाल जी को। अग्रवाल जी इज हियर, एंड माता जी को भी पीछे माला दीजिए, एंड कीप ऑन चैंटिंग एंड यू विल सी। उनको सिखाइए कैसे जप करना है। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग अपने घरों में व्यस्त होंगे या कुछ हैं, मैं एटलीस्ट सैटरडे संडे संध्या के टाइम पे भागवत कथा करने के लिए जरूर सुनने के लिए आइए। श्रीमद् भागवतम के प्रसंग जो है अति उत्तम है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए भागवतम सुनने के लिए आइए। शाम को भी, सुबह भी, एटलीस्ट संडे को अपना जीवन सुधारने के लिए भक्तों का संग कीजिए। दिस वीक इज फॉर द होली नेम वीक, so kindly take up this process of chanting the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. So I request all the congregational devotees, all our wonderful devotees who are coming, today you take prasadam, and after that everybody should be busy in giving the mala to everybody, and take their addresses, take their telephone numbers, so that you can transform their life by monitoring their lives, बिकॉज भौतिक संसार में बहुत आसक्ति है, इसलिए मॉनिटर कीजिए। जिसको भी माला देते हैं, कहाँ रहते हैं, जब करो आओ, उनको मॉनिटर कीजिए ताकि वो अच्छे भक्त बन सके। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा मदन मोहन भगवान की, निताई गौर सुंदर भगवान की, प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। So thank you very much, इसके सुदास प्रभु जी। हाँ, अभी प्रभु जी ने जिसको जप करने के लिए कहा है, कृपया आप माता जी और प्रभु जी यहाँ बैठ के दो माला जप करेंगे। आप सभी के लिए प्रसाद भी होगा, तो प्लीज 2 माला जप कीजिए, और शाम को भी संध्या आरती के पहले भी जप करेंगे हम लोग। बाहर अरेंजमेंट किया बैठने के लिए, और बाहर भी हमारा बूथ बना हुआ है, बहुत बूथ बना है उधर भी। वहां पर बैठ के जप कर सकते जो नए